फिक्स मी के प्लेस पे डिफॉल्ट पुट किया और देन यू नीड टू रन दिस सेल और द कमांड इज शिफ्ट एंटर। ठीक है, ये प्रीट्रेन CNN मॉडल है वो लोड हो रहा है। नहीं हो रहा वो फिक्स मी के प्लेस पर ऊपर ऊपर ऊपर। Okay, now what is the next fix me? See 7.3. In 7.3, what is the title of this? Freeze base model. And how can you freeze the base model? Which notebook you need to refer? Notebook number 5B. You can see in 5B how can you freeze the base model. In notebook number 5B, you can see how to freeze the base model. Have you got this? Have you got this? In notebook number 5B, you can see 5B.2.2. If you want to freeze the base model, then you need to pass that false in the bracket. Just see that in place of fix me, what should be there? False. वो जो false है उसका F कैपिटल ही होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, आप अगर F भी स्मॉल टाइप करोगे तो फिर से आपको एरर आएगा। फिक्स मी के प्लेस पर फिक्स मी को डिलीट करना है और उसकी जगह वो प्लेस करना है फॉल्स। इसके ऊपर का ये रख लीजिए। देखो डिफॉल्ट कैसे लिखा है 5B में देखो। देखो वैसे जैसे 5B है ना, 5B में देखो VGG वेट डॉट क्या लिखा है, 5B कहाँ पर है, VGG डॉट वेट लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है, डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट होना चाहिए कहाँ पर, वहाँ डिफॉल्ट। ये प्रॉपर्टी का नंबर इसके बाद का प्रॉपर्टी है, इसके बाद ये रख लिया। Okay, run over that, fix it. Now see, listen everyone, listen here. ये जो first था, what is the first fix me over here? First fix me default, सभी ने default लिखा, रन कर दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड फिक्स मी ये है, क्या लिखना है यहाँ पर, इसको रन करो, रन कर दिया सभी ने। व्हाट इज द आउटकम, फॉल्स, ठीक है। देन थर्ड, add layers to the model. Okay, you can add some of the layers. Just run this cell, no fix me are there, just simply run as it is. Now see, after that next fix me, what is this number of classes? No, number of classes. Are total how many categories are there? No, इस प्रॉब्लम में कितनी कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज है ना, फ्रेश एप्पल, फ्रेश बनाना, फ्रेश ऑरेंजेस, रोटन एप्पल, रोटन बनाना एंड रोटन ऑरेंजेस। तो फिक्स मी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 6, जस्ट टाइप 6।
किया आपने, ठीक है, ये रन हो गया, ठीक है। Now see, till 7.4 everything is fine. Till 7.4 everything is fine. Now go to 7.5. In 7.5 we need to define the loss function. We need to define the loss function. Which loss function that we defined in the first one? See here, जो नोटबुक आपने बनाई थी उसमें कौन सा लॉस फंक्शन यूज किया है? Go to notebook number 2. Go to notebook number 2 जो हमने अभी पढ़ी थी। Go to notebook number 2 में देखो लॉस फंक्शन कौन सा यूज किया है? ऊपर ऊपर लिखा होगा लॉस फंक्शन और ऊपर ये देखो 2.5 में देखो 2.5 में कौन सा लॉस लिखा है? NN डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस। वो क्रॉस एंट्रोपी लॉस वहां पर पेस्ट कर दो, जस्ट पेस्ट दैट क्रॉस एंट्रोपी लॉस इन प्लेस ऑफ दैट फिक्स मीन। प्लेस कर दिया, रन दिस। Okay, okay. Listen everyone, 7.5 is clear. Any problem in 7.5? Any problem to anyone in 7.5? The previous model of proportion के ये देखो 60 तो भी ना Okay, now see data transform. Now see 7.6. 7.5 is not clear. 7.3. You need to click on. You need to write false whole, not fault. नहीं बेटा small ये फिक्स भी है ना क्रॉस एंड स्टार्टिंग से सारी सेल रन करिए प्रॉपर। लिसन 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 लिसन, कोई भी एक सेल अगर आपकी मिस हो जाएगी तो एरर आएगा। जैसे कुछ मिस्टेक आ रही है कि NN इज नॉट डिफाइंड, तो जो सबसे पहला सेल है वो आपने डिफाइन रन नहीं किया है। मेक श्योर दैट कि ऑल सेल यू रन प्रॉपर्ली इन दैट सीक्वेंस ओनली, तो ही रन होगा।
Here you need to see this. Control P. Next is 7.6 for data transformation. So here you need to refer this notebook number 4A. See this notebook number 4A. Here they have defined this transformation. Then 32. Now frame this for 10 epochs. Okay, here tuple is set to 2. And here tuple is set to false. सर वहाँ पर मतलब दिया हुआ है कि आपको कौन से नोटबुक प्रिफर करनी है, ठीक है। 7 पॉइंट कहाँ तक आया? 7.6 में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, ओनली वन फिक्स मी इज देयर। गो टू नोटबुक नंबर 4A। In that 4A you can see that training with augmentation. So go to 4A 3.4 compose. 4A 3.4. In that 4 rows are there. Random rotation, random resize. वो पूरा कॉपी कर लो और उस फिक्स की जगह प्लेस कर लो। 3.4 में भी लिखा है ना। 3.4 ये चार उस फिक्स में दिया। स्टार्टिंग से एक बार सारे
कोई भी सेल मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेल मिस नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं कुछ एरर आ रहा है या कहीं कोई फिक्स भी है जो आपने रिप्लेस नहीं किया है तो ही आपको एरर आएगा। और फिर भी अगर एरर आ रहा है तो फिर से स्टार्टिंग से एक बार फिर से रन कर दीजिए सारे सेल। लिसन इपॉक 10 रखना है, ठीक है, इपॉक 10 रखना था। और जो लास्ट में 7.9 है, 7.9 उसमें भी 10 इपॉक्स थे, उसमें 1 इपॉक है। अल्टीमेट एम क्या है कि वैलिडेशन एक्यूरेसी 92 से ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। 92 से कम होंगी तो फिर वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा आपका। Listen everyone, listen here, listen. See, this is my which number 7.9. So in 7.9 I made these changes. In place of this fix me I wrote true, and in place of this epoch it is mentioned 1 there and I changed that 1 to 10. Now I am getting this much accuracy. It is around 95%, 95.44%. Now we need to evaluate the model. यहाँ कुछ नहीं करना है, no fix me is there. Just run this. I am telling you the last step कि आपको क्या करना है, ठीक है? Just concentrate here for 2 minutes. Just run this. Now last, run the assessment. ये भी assessment आपको as it is run करने हैं. Run this assessment and run this last assessment. Now this is evaluating model to obtain the average accuracy. Average accuracy is 95%. So here it is printed, congratulations, you passed this assessment. Now in 7.12, how to generate a certificate? See, you need to go to the previous tab, this tab, and you need to click on this last one, assess task. When you click on this last, then it is grading, and if that accuracy is greater than 92%, then your certificate will get generated over here, and then it is fine. Okay, see here, listen, it is great feedback. So certification is generated over here. Now see, how can you download this certificate? Just listen, how can you download this certificate? So here you need to go over here in that my learning. So in my learning, I think you can get this certificate over here.
You can also download this PPTs. Okay, now see here, when you complete this course, then your certificate will get displayed over here. You can download the certificate from here, Fundamental of Deep Learning. So see, you can download the certificate. This was logged in from this Gaikwad-Patil account, so you can download the certificate. Save as video. If you are facing any problem, any difficulty, then this notebook is available over here. You can refer this notebook, you can complete the assignment, and then you can generate the certificate. Probably very small mistakes are there that you are committing, like suppose you ignore one cell, or you are not fixing any fix me, this kind of error that you can. So you can download the certificate, you can post the certificate on LinkedIn, etc. Okay. This was any problem, any difficulty on that first come. Any doubt or any query? We understood only one notebook, but you need to go through all the notebook. You need to understand what is there in each of these notebooks, and then you can complete the assessment. Patients listening. I think due to lack of time, we should close this session over here.
to ask questions. बैक साइड कितनी होगी रे बैक साइड For delivering such an insightful lecture on the deep learning fundamentals. The practical session provided us with a solid foundation in deep learning, covering essential concepts, which helping us understand how deep learning is transforming technology. We truly appreciate the time and effort you invested in sharing your knowledge with us. Once again, thank you, sir, for your lecture. Now, I would like to request Dr. Gaikwad-Patil ma'am to felicitate Dr. Tausif Diwan sir with a moment. Thank you, ma'am. वो दो मैम हाँ हाँ हिमांशु साइड
Look at this. When you press on that start button, then you will get this kind of page. Okay. And after that, you need to click on the launch button. Just click on this launch button. Okay. You need to click here. So one Jupyter notebook will get opened up. Now here several notebooks are there. We need to understand all these notebooks. And after that, one assignment is there that we need to complete. When you complete this assignment, then you will get certification from NVIDIA directly. Basically, the costing is there with the certification associated, but here no need to pay anything. And the thing is that you need to complete the certification by today evening. Certification will take only half an hour to complete the assignment. So we will understand some of the notebooks so that you can understand what is happening here. This certification is brought to you by NVIDIA. Here certification name is Fundamental of Deep Learning. So in left hand side you can see several notebooks are there. So simultaneously I will be running these notebooks at that laptop and you will be running all this on your system. I will tell you how to run this cell. If you are not comfortable with Python, the syntax, etc., no need to worry. आपको सिर्फ ये समझ में आना exact syntax. Do not bother about it. Just ignore. Okay. So this is the Jupyter lab. Just go to the first cell. See, this is my first cell. Here one print statement is there. Here you can see one print statement. What we are printing? This is just a simple print statement. You need to click onto that cell. Now everything is there on the cloud. No need to install any software, anything. You can just run that cell by pressing Shift Enter. Just press Shift Enter. You can see the outcome. Getting the outcome? You need to press Shift Enter for running a cell. So I hope how to run a cell. This is clear to everyone. Okay. Second cell is that clearing a GPU memory. Second
cell on that notebook is nothing but clearing the GPU memory. Here we are just calling one memory, then one box will get opened up. You need to click OK on that box. Fine. So this was just an introductory notebook. Now go to this second notebook. Go to this second notebook. This second notebook we will implement one deep neural networks here in the second notebook. Name of this notebook is ASL, American Sign Language. American Sign Language data. No, MNIST open नहीं करना है आपको. MNIST के बाद just ignore this MNIST. MNIST के बाद एक और notebook है ASL. Number is 02 ASL. वो आपको ओपन करनी है. Okay. Now everybody just concentrate here. We will understand all these notebooks. First notebook and then you can run these notebooks. First listen here and then we will see how to do that. Okay. So these are the objectives. Here we need to prepare this image data for model training. Then we can create and compile a simple model for classification task. Okay. Classification means we are interested in dividing the data, like which category it belongs to, whether it is category A, category B, category C. This type of problem is known as classification problem. So यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? You are implementing a model for classification. Now see the first cell, this torch.nns neural networks. So these are the introductory libraries that is required for running all these program. You need to run this. And what is the command for running it? Shift enter. Just press shift enter. Okay. Here it is checking whether the CUDA is available for this execution or not. So do not go in the detail of this whether CUDA is available or not. Basically this program is running on GPU. Basically these programs are running on GPU. It is not running on your CPU. Okay. These GPUs are provided by the cloud, NVIDIA cloud, and then you are running this program on that GPU. That's why first we need to check whether the CUDA is available or not. CUDA is a programming language which is used for running this parallel version of the program. Fine. Now we will see what is American Sign Language data. See here 2.2. See here you can see which kind of data is this. So this is my image and this is the label. This is image and this is the label. Then next image, this is the label. Total how many categories are there? Come on, total how many categories are there? 26. See here, it's a classification problem. तो एक इमेज आपको दी है, आपको ये बताना है मॉडल इंप्लीमेंट करके कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है. कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ऐसी टोटल कितनी कैटेगरीज है? 26. Among these 26 categories, we are not using all 26 categories. We are not using two categories, that is category number J and category number Z, because these two categories require some sort of movement. Okay. All other categories are static images. So we are not using those two categories. So if we ignore those two categories, then how many categories are left? 24. Basically, we are implementing a model, classification model, and how many categories that we are using? 24 categories. ठीक है. Image समझ में आ गई किस टाइप की इमेज है? Now see. Okay. Go to 2.2.1. This data set is available in Kaggle. Okay. First we need to load the data. For that we need to define these four variables. Just see here these four variables. ये आपको समझ में आना चाहिए. What is X train, what is Y train, what is X validation, and what is Y validation. Now see, once you are having the data, then first of all this data is divided into two categories, training and validation. So training and validation two categories are there. Basically you can understand training and testing. तो ट्रेनिंग डेटा पर आप मॉडल को ट्रेन करोगे और टेस्टिंग डेटा पे मॉडल को इवैल्यूएट करोगे वो मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है. इट इज फाइन. Now four categories are there. X is used for image and Y is used for label. It's a labeled data training set, image.
X train means training set images. Y train means क्या होना चाहिए? कौन से लेबल्स? ट्रेनिंग सेट के लेबल्स, ठीक है. X validation means testing set images and Y validation means testing set labels. So these four categories are here. I am repeating this, okay? X train means training set images, Y train means training set labels, X validation means validation set images, and Y validation means validation set labels. Fine, these four things are here. Now we need to read in the data. So this data is available in this CSV format. Okay. See where this data is there. You can click on this data folder. In this data folder, just double click on that data folder. Then here you can see ASL data. Click on that ASL data. Here two CSV files are there. What is CSV file? What is CSV file? Comma separated values. Comma separated values. Okay, this is CSV file. So one file is related to training and another file is related to testing. One file is related to training, another file is related to testing, right? Then see, we are reading this data using this Panda library. So data is there in this folder, train DF and validation DF. Just run this cell, and for running a cell, what is the command? Shift enter. Shift enter is the command. Just run this. So now we are having two variables, train DF and validation DF. You are having two variables, train DF and validation DF. Now we need to explore the data. See, if you want to print some of the data of train DF, then how can you print? You need to use this method, dot head method. So when we are printing this train DF dot head, it means that we are printing some of the initial rows. Okay. Now just run this and see the outcome. See, this is the outcome. So this is my first sample, this is my second sample, this is my third sample. Okay. So in one sample you can see the first one is label. So this is label 3. What do you mean by that label 3? क्या होना चाहिए वो label 3? See total how many categories are there? 24. First label is A. It is indicated by 0. Second category is B. It is indicated by label 1. So it is 3. It is indicated by label D. It is label D, right? So first column is that label and rest all will be pixel values. So it is image. Which type of image is this? Which type of image? It's a black and white image. Okay. Size of that image is 28 by 28. 28 by 28. It is not colored input. If it would be a colored input, तो ये क्या होगा? 28 by 28 by 3. But it is a black and white input, so it is 28 by 28 only. Now see, these are the pixel values. Total how many pixels would be there? You can see total how many pixels? 784. Why 784? Because 28 multiplied by 28. Total how many values are there? 784. And see here, what is the shape of this? 5 rows and 785 columns. Why 785 columns? Why not 784? Because first column is label. First column is label and rest all columns are. It is clear? Okay. Now, इससे पहले आपने देखा था 4 वेरिएबल्स. कौन से 4 वेरिएबल्स? X train, Y train, X validation, Y validation. So from this data we need to figure it out. What is X train, what is Y train, what is X validation and what is Y validation. आप इस एक्सेल शीट से मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज एक्स ट्रेन? क्या होना चाहिए एक्स ट्रेन? एक्स ट्रेन मींस ट्रेनिंग सेट इमेजेस. तो ये कौन से कॉलम्स होने चाहिए?
कौन से कॉलम होने चाहिए? दिस पिक्सल 1 टू पिक्सल 784 और ये जो फर्स्ट कॉलम है लेबल, ये कौन सा वेरिएबल है? विच वेरिएबल इज दिस? वाइड रेंज। ये कौन सा डेटा है? इट इज ट्रेन डीएफ। एक और आपके पास वेरिएबल है कौन सा? वैलिडेशन डीएफ। सो हियर वी आर एक्सप्लोरिंग दिस ट्रेन डीएफ। सो दिस इज ट्रेन डीएफ। नाउ सी in this cell what we are doing? In this cell what we are doing? We are removing that column. Which column? Label. We are removing label from train df. We are removing label from validation df. और ये किसको असाइन किया है आपने? y train and y validation. ये समझ में आ रहा है? ठीक है? तो आपने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, y train और y validation. आपने x train और x validation डिफाइन किया है अभी? नहीं, अभी तक नहीं किया। ठीक है, देखो पॉप से क्या होता है? रिमूव होता है। ठीक है, आपने वो कॉलम रिमूव किया और किसको असाइन किया? y train and y validation. y train is training set labels and y validation means testing set labels. ठीक है, ये क्या प्रिंट करवा रहे हो? What you are printing? You are printing y train. Y train means what? Labels of what? Labels of training data. Labels of training data ये आप प्रिंट करवा रहे हो Y train, तो ये labels प्रिंट हो रहे। ठीक है, now extracting the images. See, once you remove that label, what is remaining? Pixel values. वो pixel value आपकी image। ठीक है, देखो आपने लेबल रिमूव कर दिया यूजिंग दैट मेथड पॉप से क्या हुआ? लेबल हट गए। ठीक है, अभी क्या बचा आपके पास? पिक्सल वैल्यूज बची। वो पिक्सल वैल्यूज आपकी इमेज है। वो कौन से दो वेरिएबल को असाइन करनी है अभी? एक्स ट्रेन और एक्स वैलिडेशन। तो आपने एक्स ट्रेन और एक्स वैलिडेशन को असाइन कर दिया, दोनों चीजें। नाउ यू विल डिफाइन ऑल दिस फोर वेरिएबल्स, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स वैलिडेशन एंड वाई वैलिडेशन। ठीक है, जस्ट रन दिस सेल। ये रहा। Now summarizing the training and validation data. See, क्या प्रिंट करवा रहे हो? Shape print करवा रहे हो। Just print this shape and see the outcome. What is the shape? Shape is this 27,455. What is this 27,455? This is number of image. Number of image in which set? अरे आपके पास दो सेट है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ये नंबर ऑफ इमेज की कौन से सेट में? ट्रेनिंग सेट। एक सेट में एक सैंपल और उसका साइज कितना है? 784। डेटा इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। इट इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। नाउ you just guess. Don't run this. What should be the shape of y train not shape? What should be the shape of this? What should be the shape? 784? ये 27,000। See, total कितनी images है? 27,455। See, जितनी images होंगी उतने ही labels होंगे। अरे जितनी image होंगी उतने ही label होंगे ना। ठीक है, तो कितने labels होने चाहिए? इसको रन। कितने labels हैं? 27,455। ये क्लियर है? ठीक है। नाउ ये कौन सा सेट है? एक्स वैलिडेशन 255। When you divide each and every value by 255, then जो previous range था 0 to 255, it is converted into 0 to 1। देखो एक बार इसको डिवाइड करो सभी को 255 से। नेक्स्ट सेल जस्ट नॉर्मलाइजेशन हो गया।
After normalization, you can also print that values. So minimum is 0, maximum is 255 divided. Now see that custom data set. Custom data set, you can divide this custom data set with the help of this class. Okay. So see here. This is the init class. First of all, everything should be there onto the device. First of all this data like X means image, Y means label, this should be sent to the device. So this is the method, init method. Once you create the object of this class, my data set, then this method will get called automatically and these two statements will get executed. Second method is for accessing one item and third method is for length. Okay, just run this cell. Then here we need to define the batch size. Batch size, here we are defining batch size of 32. Total how many training data is there? How many samples are there in training data? वो देखा है हमने. अरे कितने सैंपल है ट्रेनिंग डेटा में? 27,000. वो जो 27,000 something था, that many numbers, that many samples are there in training data. What is this batch size of 32? क्या होना चाहिए batch size of 32? When you train the model, then randomly 32 samples are selected from that 27,000. You apply model training and then you take another set of 32. Then you apply model training, then you take third set of 32 samples, then you apply model training. So this is the meaning of batch size. Here see what you are defining in batch size. 32. Then train data is this my data set. So here you can see my data set of this X train and Y train. Then see data loader and length of this. So just run this three statement. So this was related to training and this is related to testing. Now you can print this train loader and you can print this next. So train loader, the task of train loader is to load the data from training set and the task of validation loader to load the data from validation set. I am repeating. The task of train loader to load the data from training set and the task of validation loader to load the data from validation. दो सेट है आपके पास. कौन से दो सेट है? ट्रेनिंग और वैलिडेशन. ठीक है. तो दोनों से आपको डेटा लोड करना पड़ेगा. ठीक है. डेटा लोड कैसे होगा? डेटा लोड कैसे होगा? कितना डेटा है आपके पास? 27,000 ट्रेनिंग डेटा है और वो 7,000 समथिंग टेस्टिंग डेटा है. ठीक है. लोड कैसे होगा? आपने बैच साइज डिफाइन किया है. बैच साइज कितना डिफाइन किया है? 32. तो 32 सैंपल्स लोड होंगे पहले. ठीक है. दोनों में, ट्रेनिंग में भी वैलिडेशन में भी 32 सैंपल्स. आप बैच साइज 32 की जगह 64 ले सकते हो, 128 ले सकते हो, 256 ले सकते हो. जनरली बैच साइज जो होता है वो इन द मल्टीपल ऑफ 32 होता है. ठीक है. ये समझ में आ रहा है? नाउ सी द नेक्स्ट सेल. नाउ सी ये समझ में आता है कि देखो अभी रन नहीं करना है उसको. डोंट रन दिस. फर्स्ट यू गेस व्हाट शुड बी द आउटकम एंड देन यू रन. व्हाट इज बैच ऑफ 0? बैच ऑफ 0 क्या होना चाहिए? देखो एक बैच लोड होती है. क्या लोड होता है? सैंपल्स लोड होते हैं. सैंपल्स में दोनों चीजें हैं. कौन सी दोनों चीजें? इमेज भी है और लेबल्स भी है. इमेज भी है और लेबल्स भी है. तो बैच ऑफ 0 में क्या होना चाहिए? इमेजेस. और बैच ऑफ 1 में क्या होना चाहिए? लेबल्स. अभी मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? बैच ऑफ 0 का शेप प्रिंट कर रहा हूँ. आप मुझे बताओ कि क्या प्रिंट होना चाहिए? बैच साइज कितना है? 32. एक सैंपल का साइज कितना है? हमारा एक सैंपल का साइज कितना है? कितनी वैल्यूज है? 28/28 मतलब टोटल कितनी वैल्यूज है? 784. अभी रन करो आप उसको. नाउ जस्ट रन दिस एंड सी द आउटकम. व्हाट इज द शेप दैट यू आर गेटिंग?
32/784। ये समझ में आ रहा है? आप मुझे बताओ कि अगला आउटपुट क्या होगा? नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा? बैच ऑफ 1, उसमें क्या होना चाहिए? नहीं, बैच ऑफ 1 में क्या होगा? बैच ऑफ 1 में लेबल्स होंगे। कितने लेबल्स होंगे? 32 लेबल्स होंगे। जस्ट रन दिस। क्लियर है? इज इट क्लियर? So far we have not created any model. अभी तक हमने कोई मॉडल वगैरह क्रिएट नहीं किया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? We are just understanding the data. What type of data is this? What is the characteristics of the data? Do we need some sort of pre-processing, etc. So these are the characteristics of the data. Next we will see. This is the building the model and how we can build the model. See, next cell. What is the input size? Input size is 28 multiplied by 28, right? Total how many classes are there? 24. Just run this cell. Fine, it is clear. Then we need to create a sequential model. Okay, what is sequential model? Third layer. First layer क्या होगी? First layer आपका input होगा. फिर सेकंड लेयर न्यूरॉन, फिर थर्ड लेयर ऑफ न्यूरॉन एंड देन लास्ट लेयर। इस टाइप से आप न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करोगे। सी जस्ट रन दिस सेल, you can see the solution over here. See this, you can click on this triple dot. In solution you can click on this triple dot. Okay, no need to type everything over here. We can just refer this. What is the first layer? What is the first layer? What is the first layer? Flatten. Flatten में क्या होता है? जो भी आपका वॉल्यूम होता है, this volume is converted into a vector. Everything, any volume is converted into vector. What is the second layer? Second layer, linear layer. Linear layer में आपको ये बताना होता है कि how many input values are there and how many output values are there. Linear layer में आपको ये बताना होता है कि how many input values are there and how many output values are there. Input values कितनी होंगी? Input size लिखा है आपने। Input size डिफाइन किया है आपने इससे पहले? क्या डिफाइन किया input size? नहीं, input size आपने डिफाइन किया है इससे पहले। 28/28. So 28 multiplied by 28, total how many values are there? 784. So this is my input size. और उसके बाद आपने क्या लिया सेकंड पैरामीटर? सेकंड पैरामीटर आउटपुट। इसमें क्या डिफाइन किया है? 512. What is this 512? Output size. 512 means number of neurons in the output. Okay. Then after that, next non-linear activation function, rectified linear unit. Then one more linear unit. 512 input, 512 output. Then one more non-linear layer and then last linear layer in which 512 neurons as input. And how many output neurons are there? How many output neurons? 24. How many output neurons? 24. Why 24 neurons as output? Because we are having 24 output categories. Because we are having 24 output categories. That's why these 24 neurons are there in output. Just hold a minute. Now see. The last one is you visible? Yes. Now just see the basic working of this. Which kind of problem is this? What is the problem? Problem statement? Problem statement is handwritten digit recognition. What is the image given to you? Handwritten digits की image दी है आपको, ठीक है? और आपको वो recognize करना है कि वो कौन सी digit है. Whether it is handwritten digit 0, handwritten digit 1, 2, 3. Okay. Now, this is my input layer. See here. This is my input layer, this is my hidden layer, and this is my last layer. So this is layer of neuron, this is also layer of neuron, and this is
layer of inputs. See total how many categories are there in output? 9 or 10? 10. Because handwritten digit 0 to handwritten digit 9. So total 10 categories. So total how many neurons are there in output? 10. So this is first neuron, second neuron, third neuron, fourth neuron. ठीक है? ये क्या predict करेंगे? It computes the probability of the whether it is handwritten digit 0, handwritten digit 1. Like the first neuron will predict the probability that it is handwritten digit 0. Second neuron will predict the probability that it is handwritten digit 1. Third neuron will predict that it is handwritten digit 2. Such that summation of all this probability is equal to 1. Then you will take the maximum probability. जैसे suppose handwritten digit 4 है, उसकी probability आपको 54 मिल रही है, ठीक है? Then you will take that 54 and you can conclude that okay, this is handwritten digit 4. ठीक है? This is another structure of a deep neural network. See what is this deep neural network or dense neural network? A neuron is connected to all the neurons of the previous layer. A neuron in a layer is connected to all the neurons of the previous layer. It means that this type of connection is known as fully connected or dense neural network. Fully connected or dense neural network. अभी जो आप implement कर रहे हो वो भी वही है, fully connected or dense neural networks. See, input layer है, वो input layer के बाद जो first layer है, middle layer, उसमें कितने neurons हैं? 6. उसके बाद second layer में कितने neurons हैं? 6. उसके बाद की layer में कितने neurons हैं? 8. And then last layer 4. Now see. Just run this model. Okay. Now here we are printing this. We need to compile first the model and then we are printing the model. Now you tell me how many input neurons are there? Input. What is the first layer? First layer is flattened. Second layer is linear. Linear layer में input कितना है? How many input values are there? 784. And how many output values? Output neurons? 512. इसके बाद की एक और लेयर होगी, उसमें इनपुट कितने न्यूरॉन्स होंगे? 512 और आउटपुट कितने न्यूरॉन्स हैं? 512. और उसके बाद एक और लेयर है, लास्ट लेयर, उसमें कितने न्यूरॉन्स हैं? आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं? 24. और 24 न्यूरॉन्स क्यों है ये समझ में आ गया? Why 24 neurons? Because we are having 24 categories. Because we are having 24 categories A to Z, and we are not considering J and Z. That's why 24 categories are there. Now see, we need to define this loss function. We need to define this loss function, categorical cross entropy loss that we are defining, ATAL optimizer that we need to define. Just run this tool. Now train the function. Okay. So this is by training the function. It is there. First, loss and accuracy is set to 0. Then we are starting model training. X, Y are coming from data user. What is X and what is Y? X is image, Y is the label. But कौन से सेट से आ रहा है ये सब? ये कौन से सेट से आ रहा है? दो सेट है आपके पास, ट्रेनिंग और वैलिडेशन. ये ट्रेनिंग सेट से आ रहा है, ठीक है? और ये लोड कौन कर रहा है? Who is loading this? Train loader. Who is loading this? Train loader. ठीक है. Then you are calculating the outcome of this. You are calculating the outcome. This is the output model X. Then optimizer, loss function, and then finally loss is accumulated. Loss is equal to loss plus batch loss, and accuracy is equal to accuracy plus get batch accuracy. See, X, Y are getting loaded from train loader. Data is loaded in terms of batches. फर्स्ट बैच आप लोड करोगे और लॉस में ऐड करोगे. लॉस इज इक्वल टू लॉस प्लस बैच ऑफ लॉस ऑफ दिस बैच. एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेसी प्लस एक्यूरेसी ऑफ दिस बैच. ठीक है. उसके बाद कौन सी बैच लोड होगी? सेकंड बैच. कौन लोड करेगा? ट्रेन लोडर.
फिर से आप क्या करोगे, लॉस में वो अक्यूमुलेट करोगे और एक्यूरेसी में अक्यूमुलेट करोगे। फिर उसके बाद कौन सी बैच लोड होगी, थर्ड बैच लोड होगी। लोड कौन करेगा, ट्रेन लोडर। लॉस एक्यूमुलेट करोगे और एक्यूरेसी एक्यूमुलेट करोगे, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। ये कौन सा फंक्शन है, ट्रेन फंक्शन। Just run this. Now this is validate. This is validation. Now calculating the accuracy. See here, you can see some fixed means are there. This is fixed mean and this is also fixed mean. This fixed means should be replaced. So this is a method for calculating accuracy of one batch. Okay. So here this fixed means should be replaced by something else. We need to decide like what should be there in place of this fixed mean and what should be there in place of this fixed mean. You can see the solution over here. In place of this fixed mean, you can put this output, and in place of this fixed mean, you can fit this y. Okay, and then you need to run this. Then this is actual training. Epoch means total how many times we need to run the to run the model. Okay, so here for 20 epochs we are training the model. So train and validate. Train function will train the model and validate function will evaluate how the model is performing on the validation data. So you can just run this and see the outcomes. This is first epoch. This is the first epoch. रन किया फर्स्ट हमने, देखो ट्रेन लॉस, ट्रेन एक्यूरेसी प्रिंट हो रहा है, देन वैलिडेशन लॉस एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये इपॉक 0 था, लास्ट इपॉक क्या होगा, इपॉक 90, बिकॉज इपॉक 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लास्ट इपॉक होगा इपॉक 90। देखो लास्ट इपॉक में क्या मिल रहा है, what is the final training loss, sorry training accuracy 97%। आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। As well, I will put my inputs because I am dealing with the numbers of projects. One to the artificial intelligence, enhance the robotics mechanism on artificial intelligence, how the robots will be work out. I would like to share that type of knowledge with you all of it. Okay. So first of all, my question is: you today studied about the deep learning, right? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. So what is deep learning? What is deep learning? Okay, चलो पहला क्वेश्चन, what is artificial intelligence? Am I audible? Without mic? Okay. तो artificial intelligence क्या है? What is AI? What is AI? AI stands for artificial intelligence. इसके आगे तो ऐसी कोई मशीन देखी है जो ह्यूमन की तरह सोचती हो? Yes sir. Which one? Robots. Robots? नागपुर में ऐसे रोबोट? How are you? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? Are you seeing? फिर वो किचन में गया, उसने चाय बनाया और आपके सामने ला के रख दिया। Sir, at the airport. Yes, is it? Sir, at the airport. At the airport. Is it that much of advance? No, sir, that much. No. Okay, चलो। इससे ही थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को कि AI एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर सब डोमेन्स क्या है, मुझे डीप लर्निंग कब पढ़ना है, मुझे मशीन लर्निंग कब पढ़ना है, डेटा साइंस कब पढ़ना है, इट कम अप विद द डिफरेंट वे। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने देखा है एक वर्ड रोबोटिक सर्जरी, एक्चुअल में आपने रोबोट को सर्जरी करते देखा है? यस सर। यू सी? यस सर। यस, वेयर? सर, एट द मिडास हॉस्पिटल। एट अ मिडास हॉस्पिटल। मिडास हॉस्पिटल, राइट? कैसा करता है वो सर्जरी? खुद होके जाके? नहीं सर, कटिंग द स्क्रीन्स
Going inside. सर सर्जन होता है, सर्जन हाथ में। Yes. So let me tell you what is exactly this AI, what is the future of AI. सीधे कुछ एग्जांपल देता हूँ. 10 साल बाद क्या होने वाला है. आज जब हम AI की बात करें तो AI is not only a single entity, it come up with a different entity with the different kinds of domains and different kinds of implementation. Healthcare का डोमेन AI में अलग है, बिजनेस इंटेलिजेंस का डोमेन AI में अलग है, आपके अदर जो मशीनरीज होती है इंडस्ट्रियल AI अलग चलता है, रोबोटिक्स AI अलग चलता है, डेटा का AI अलग चलता है. Everywhere there are some kind of segmentation. The clusters are there different and they are working on this. हर इंडस्ट्री का एक पर्पस है कि मेरी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट हो. जैसे कि फॉर राइट नाउ यू माइट बी हर्ड अबाउट चैट जीपीटी, राइट? एक ही टूल पता है हम लोगों को चैट जीपीटी, लेकिन ऐसे 300 से ज्यादा टूल्स है एआई के जो आपको हर चीज को ऑटोमाइज करके देंगे. इवन दो यू माइट बी सीइंग द न्यूज़ राइट नाउ, देयर आर द एंकर्स, राइट? एआई बेस्ड एंकर्स, मुझे स्क्रिप्ट दी जाती है, उनका लिप मूवमेंट देखिए, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, वैसे ही होता है जैसे वो बात कर रहे हैं. Getting my point? This is one of the tools. If you go in the advertisement industry, now advertisement industry has also changed. अब हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ चीजें ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है, उसके लिए कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, फिर वो जाके वायरल होती है. जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो फेसबुक के रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स बनाते हैं, they are making the content viral manually. But right now the things are going to change. You can make your content viral by using the AI. It's also coming in this industry right now. Your WhatsApp will also get powered by, पता है? Got it? Yes or no? Google is also get powered by AI. कौन सा tool? Meta. वो Facebook का है. Gemini. Right? Everyone is moving toward the artificial intelligence. Now, what is exactly the artificial intelligence? Artificial intelligence, the intelligence which will put it into the brain of the machine to take certain decision, is called as artificial intelligence. For example, in future, what will going to be happen? कैसे चेंज करेगा ये पूरी जिंदगी आप लोगों की? आज जब आप मोबाइल पे जाते हो, you want to do the chatting with someone, just typing और बहुत बोर होता है टाइप करते हैं. जब पहली बार WhatsApp इंस्टॉल हुआ था तो आई रिमेंबर दैट डे, बहुत अच्छा लगता था टाइपिंग करने में, रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता. आज भी हम लोगों को अभी जो ट्रेंड चल रहा है, चेकिंग द स्टेटस ऑफ द एवरी पीपल, राइट? सबसे पहले उठने के बाद क्या है, व्हेन यू आर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहली चीज क्या होती है? मोबाइल. देन गोइंग ऑन व्हाट्सएप, देन चेकिंग द स्टेटस. इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, राइट? ओके. और इसका भी फिनोमेनन सेट है. अगर किसी ने कोई बहुत सेंटीमेंट स्टेटमेंट डाल दिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आज ही का दिन है, आज जी लो कल नहीं मिलेगी. ओके. कोई जस्ट पुट करता है कि हम तुम्हारे रहेंगे, जिंदगी साथ निभाएंगे. You are just getting someone putting the kind of down faces, right? आपकी लाइफ को एक्सप्रेस करने का तरीका एक ही है. अगर आप किसी को बताना चाहते हो यार मैं बहुत दुखी हूँ, या फिर अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, किसी को अगर मैसेज देना है डायरेक्टली मुंह पे बोल नहीं सकते, तो स्टेटस में डाल दो और दिन भर वही चेक करो कि जिसके लिए रखा था उसने देखा है. This happened ना, right? Apps are changing your life. पहले इमोशंस हम लोग खुल के एक्सप्रेस करते थे दोस्तों के साथ, चल यार मुझे जॉब लगी आज पार्टी करेंगे. अब वो ऐसा नहीं है. अभी वो ऑफिस में जाएगा, फोटो निकालेगा और व्हाट्सएप पे डाल देगा, उसके हर सोशल मीडिया अकाउंट पे अपडेट कर देगा, एंड देन पीपल विल कम टू नो कि यार इसे जॉब लगी है. और नीचे कांग्रेचुलेशन भी लिखा जाता है, तो बहुत लोगों का मन दुखता है कि यार इसे लग गया, मुझे नहीं लगा, एंड देयर आर टाइमिंग द कांग्रेचुलेशन होते हैं. ओके. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करेगा, दुनिया कैसे बदली देखिए. आज आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है. याद कीजिए वो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन नोकिया था, जिसमें हम लोग गेम खेलते थे स्नेक का, राइट? वहां से लेके आज तक की जर्नी देखिए, हाउ इट इज धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है. आज अपडेटेड फीचर्स आ रहे हैं, कैमरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, इमेज प्रोसेसिंग इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिक टैगिंग आ रहा है, फेसबुक सोशल मीडिया सब ऑटोमाइज हो रहा है. तो आगे फ्यूचर क्या होगा? AI will make every device talkable with you as well as it is able to take the decision. Simple example, कॉलेज से जाने के बाद अगर मैं टीवी के सामने बैठता हूँ, AI टीवी कैसे रहेगा? राइट नाउ आपने देखा होगा कि जस्ट AI टीवी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, जस्ट आया है, इतने फीचर्स है, एडवांस नहीं हुए, बट जब एडवांस फीचर्स आएंगे पूरे एडवांस रहेंगे. कैसे रहेगा AI टीवी? बस आप जाइए टीवी के सामने बैठ जाइए और टीवी को ऐसा देखिए 5 मिनट, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा,
फेस रिकॉग्नाइज होगा आपका, कौन बैठा है, फैमिली का कौन सा मेंबर, ओके मम्मी बैठी है, ठीक है, ओके, सो यू विल से यू हाय, हाय मम्मा, हाउ आर यू, फाइन, सो शुड आई गेट ऑन और वुड यू लाइक टू टेक द रेस्ट, नो 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 गेट ऑन, ओके, ऑन होने के बाद उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मम्मी को कौन सा चैनल देखना है, कलर्स मराठी, ओके चालेल, काय ते कोणतं सिरियल असतं, बरेचसे फेमस सिरियल्स असतात, बिकॉज माय मम्मी इज आल्सो वाचिंग सेम 7 to 9 pm ऑन इट, हर घर में एक ही चैनल चलता है कलर्स मराठी एंड जस्ट दे प्लेइंग द सेम सीरियल्स एवरी, ओके, सो ऑटोमेटिकली टीवी मम्मी के पापा बैठे पता है एबीपी न्यूज़ के सिवा कुछ नहीं देते, ओके, सो दे ऑटोमेटिकली टीवी विल गेटिंग चेंज द चैनल एंड विल आस्क यू कि आपको ये देखना है या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कौन से टाइप में क्या, हाउ इट विल बी डील, कैसे काम करेगा, हिस्टोरिकल डेटा, सब चीज डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा, ओके, इसके अंदर सब डोमेन से अलग आगे उस तक मूव करूंगा, आई विल टेस्ट समथिंग एंड विल डिलीवर समथिंग, तो बेसिकली होता क्या है, what will happen, the things are going to change but they will deal onto the some kind of historical data, इसके पहले एक महीने से पापा 7 बजे टीवी के सामने बैठते हैं, रिमोट हाथ में लेते हैं और 7 दिन एक ही चैनल देख रहे हैं, एबीपी माझा, एबीपी माझा, एबीपी न्यूज़, एबीपी माझा, एबीपी न्यूज़, तो टीवी ऑटोमेटिकली आपके एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, उससे एक एमएल एल्गोरिथम बनाएगा, उसे ट्रेन करेगा आपके डेटा से और प्रेडिक्ट कर देगा दैट विल बी द चैनल कैन बी चेंज्ड, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, सेकंड एग्जांपल ऑफ ये, अब आप जैसे कभी-कभी हम लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं या फिर आप कहीं आउट ऑफ सिटी है, अब आप रिटर्न बैक जर्नी कर रहे हैं, आपकी कार घर पे खड़ी है, आपकी कार में ड्राइवर नहीं है या आपके पास सिर्फ बाइक है, बाइक खड़ी है लेकिन कोई आपको बाइक यहाँ से स्टेशन तक आने के लिए कोई नहीं है, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बाइक्स इन टर्म्स ऑफ एआई, आपका मोबाइल निकालिए, बाइक को कॉल कीजिए, ओके, ए बाइक आई एम कमिंग इन द नेक्स्ट 30 minutes from the Nagpur railway station, are you free right now, so will you come to pick up me for Nagpur railway station, your bike will be reply yes I am free, अभी तो कोई तो मुझे लेके ही नहीं गया, अब तो मैं फ्री हूँ, so should I lock myself for next 30 minutes for you, yes 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 definitely, automatic bike आपके पार्किंग से निकलेगी, ऑटोमेटिक जीपीएस लोकेशन प्रेस करेगी, बाइक ना without rider already the companies of automobile industry start research on this, you might be heard about self balance bike, Yes sir. सुना है ना, ओके, यानी वो कभी नहीं गिरेगी, ओके, तो that bikes will be on the road, come to the Nagpur railway station, pick up you and go to the whatever the destination you told him, that will be happen, this will be happen, पापा ने एक बार बाइक की लोकेशन लॉक कर दी, 11 बजे कॉलेज में रहेगा, तो बाइक 11 बजे कॉलेज में है, आपने आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई पढ़ा है, the day one almost told you about AI as well as ML also you are doing, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन इस पे कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब मैं बात करूं तो इट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 और 4 डोमेन्स, हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन हर चीज में अलग-अलग है, अगर आप हेल्थ केयर में जाएंगे तो अलग, अगर आप ई-कॉमर्स में जाएंगे तो अलग, हर चीज पे अलग, तो टॉकिंग अबाउट दिस की ML इज द पार्ट ऑफ AI का सब डोमेन्स ऑफ दिस, क्योंकि मुझे एआई जो करना, तो एआई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई से नहीं हो सकती है, दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई, वो कैरी आउट होगा थ्रू द एमएल, थ्रू द डीएल, थ्रू द बीएल, ये सभी चीजों के थ्रू ही वो कैरी आउट होगा कि दिस थिंग इंप्लीमेंट, ओके, सो टॉकिंग अबाउट एआई का अंदर पहला डोमेन एमएल, फर्स्ट इज एमएल, एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग, एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग, एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग, सेकंड DL, what is DL stands for deep learning, second stands for deep learning, third DS data science, third is first is machine learning, second is deep learning, third is fourth BI, और BI business intelligence, पहला Machine learning, दूसरा deep learning, तीसरा data science, चौथा business learning, बिजनेस, चौथा पांच, चौथा तीसरा data science, तीसरा सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
First, third, हाँ, fourth, first, machine learning, data science, field learning, machine learning, business intelligence, deep learning, machine learning. दिमाग को सोचने के लिए टाइम मत दीजिए। इंस्टेंट ऑटोमेशन दैट इज पढ़ लिया। Okay, so these are the different types of domain. Now coming to the first part, that is ML, right? Yes, sir. You might be heard. Yes, sir. Yes or no? First question, what is ML? Machine intelligence. इसके आगे बताइए, मुझे नहीं पता है। तो अगर आपका किसी को पूछे what is ML, stand for machine. It is a machine learning. इसके आगे बताइए। Right? You might be actually you are going for the external practical somewhere. तो बच्चों का आंसर यही होता है। What is data frame of data is called as data frame. Okay, what is data science? Science of data is called as data science. What is operating system which will operate is called as operating system, right? Now? Okay, so what is machine learning? Yes, anyone? Learn from data called as machine learning or वो इंजीनियरिंग वाली डेफिनेशन देनी है हम लोग। मशीन लर्निंग, लर्निंग ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज Machine learning. सब सही। लर्निंग ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज Machine learning. यस, लर्निंग ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज Machine learning. मशीन को पढ़ाना कि ये कंडीशन में क्या डिसीजन लेना है, ये कंडीशन में क्या डिसीजन लेना है, ये कंडीशन में क्या डिसीजन है। कॉल्ड एज व्हाट? Machine learning. कॉल्ड एज व्हाट? कोडिंग की तरफ ज्यादा मूव नहीं करूंगा बिकॉज़ इफ माय लैपटॉप बी कनेक्टेड आई विल एक्सप्लेन अबाउट द कोड। कुछ कोड्स फाइल मैंने आपको शेयर की है ग्रुप्स में, आपको व्हाट्सएप के चैट्स में मैंने शेयर किया था। डोंट लुक आउट इट, आई विल एक्सप्लेन यू लैटर, डोंट वरी। ओके, कम से कम मैं आपको पूरा ओवरव्यू देके वर्कआउट कर दूंगा, ठीक है? बहुत इजी है मशीन लर्निंग, इट्स नॉट टू बी बैक, लेकिन इसके पहले डायग्राम को थोड़ा सा समझना है। ओके, क्लियर? हां, फर्स्ट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मींस ट्रेनिंग टू द मशीन। बस ये कंप्यूटर है, इसे मैं पढ़ाऊंगा, इसे ये बोलते हैं, इसे भी दिस इज सी, से सी getting my point? This is called as Learning. see नहीं, machine learning. Okay, now how many types of machine learning are there? 6 to 7 times. 6 to 7 types. Some. Yes. Anyone? How many types of machine learning? How many types of machine learning? There are 3 types of machine learning. How many? Yes, how many? चलो पता है नहीं है, ठीक है, don't worry about that. Okay, I am here to explain you about this all. हाँ, how many types of machine learning? 3. कितने टाइप का? 3 types. तुमची इच्छा असो की नसो बोलायचं, ठीक है? Because sir was told me इनको आना चाहिए तो आना ही चाहिए. Okay? हाँ. How many types of machine learning? 3 types. How many types? 3 types. पहला? Supervised. Good. First is? Supervised. Second? Unsupervised. Third? Semi supervised बोलिए, reinforcement learning बोलिए. Third is? First, second, third, second, first, second, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन पहला फर्स्ट मशीन लर्निंग, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके अलावा और बहुत कुछ है, आगे नहीं रहूंगा। ओके, हां, देन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रिग्रेशन एंड classification. Types of supervised machine learning. First is second, first, second. Don't note it down. I will completely put into your brain. अगर इन फ्यूचर अगर मैं आपके कॉलेज में आपको कोई मिला भी तो मैं क्वेश्चन सबसे पहले आपको पूछूंगा। क्लियर ना? बी रेडी फॉर दिस। माय फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिथम इज टू स्ट्रांग। ओके, एक बार फेस स्कैन हो गया तो हो गया। हां, गायकवाड-पाटिल एमपीटी प्रोग्राम एडवांस एआई में कुछ भी मेरा टॉपिक था और ये यहाँ पे प्रेजेंट है और मैंने इसको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में और एआई के बारे में बताया। ओके, हाँ, तो सिर्फ मेरे साथ बोलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? 3 types. कितने टाइप? 3 types. हाउ मेनी टाइप्स? 3 types. फर्स्ट इज Supervised. सेकंड Supervised. Reinforcement. ठीक है? ओके, नोटबुक पे लिखना नहीं है, ब्रेन पे लिखना है, ठीक है? हाँ, टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग
Regression and हाँ supervise under machine learning is under AI वापस से हायर जो बताओ AI के अंदर machine learning के अंदर हाँ बराबर ध्यान दीजिए ये कौन AI के अंदर machine learning के अंदर unsupervised हाँ once again हाँ प्री ध्यान फर्स्ट इज AI के अंदर machine learning के अंदर सुपरवाइज के अंदर क्लासिफिकेशन आंखों के सामने आना चाहिए ओके वर्चुअली तो भी आंखों के सामने आना चाहिए बिकॉज़ वी आर इन AI एवरीथिंग इज वर्चुअल इन आवर फील्ड हां हियर क्लासिफिकेशन हियर इसके ऊपर तो सबसे पहले पाइथन या फिर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उसके बाद आपको मशीन लर्निंग समझना चाहिए और मशीन लर्निंग के बाद आप डीप लर्निंग को हाथ लगाएंगे ऐसा क्यों Is it possible to jump on directly deep learning? It's possible, but you need the big knowledge. कि layers क्या होती है, neurons क्या होता है, right? Dense layer किसे बोलते हैं? आपका ReLU function क्या होता है? Activation function किसे कहते हैं? Sigmoid का use करना है. कितनी hidden layer लेनी है? कितनी dense, कितनी input layers? Input layer तो हमेशा एक output layer है. Hidden layer कितनी लेनी है? Getting my point. Just think again. When we have to go for CNN, when we have to go for ANN, when we have to go for RNN, तीनों को कब वेरीफाई करेंगे, कब यूज करेंगे? इसके लिए आपको पहले मशीन लर्निंग क्या है ये समझना चाहिए और मशीन लर्निंग का ड्रॉबैक क्या है ये समझना चाहिए और डीप लर्निंग के लिए कब जाना है ये समझना चाहिए नहीं तो हम लोग डायरेक्टली करते हैं हां लगा दो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन रैंडम फॉरेस्ट नेव बायस then we're talking about k and k nearest neighbor decision tree these all algorithms are called as classification algorithm getting my point clear पहला logistic regression first is come again first is बोला है ना first is पूर्ण logistic regression logistic नहीं हाँ what is it logistic regression second decision tree first second माझ्याकडे दोनच तास आहे दोन तासामध्ये मला जेवढं डिलिव्हर करायचं तेवढं तुम्हाला डिलिव्हर तुमच्या सेटिंगला तसा रिस्पॉन्स पाहिजे ओके आय नीड द रिस्पॉन्स फ्रॉम युअर एंड हां coming to the complete tree first is come again हाँ हाँ clear supervise classification algorithms are first logistic regression असं नका करू मी logistic म्हणून शेजारचा regression म्हणता don't do like that okay complete word logistic regression second decision tree first second third random forest third first second third second first fourth SVM fourth fifth KNN first second decision tree third come again random forest fourth SVM fourth fifth fourth third second first third sorry
त्यांनी थोडी फास्टली जरी सेशन घेतला तरी तुम्हाला समजून जाईल. ओके क्लियर? हां, कम अंडर द रिग्रेशन. व्हाट विल बी द अल्गोरिदम कम अंडर द रिग्रेशन? लॉजिस्टिक रिग्रेशन हे नाव आहे, तरीही तो क्लासिफिकेशन मध्ये येतो. पण क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट? येस, क्लासिफिकेशन classify into what says classification, what says classification, classify into in some parts, in some categories called as classification. But supervised machine learning is what we call, why we call it supervised machine learning? Yes, you know output that for everywhere. So supervised is what is the meaning of supervised? When you call it as this is the type of machine learning, it's called as supervised machine learning. Yes? Anyone? Yes. The machine learning algorithm which will train on which data? Which data? Which data? Called as supervised machine learning. अगर आपका इनपुटेड डेटा लेबल है तो क्या बोलेंगे? तो लेबल डेटा लेंगे और डेटा which have simple definition. Data which have unsupervised ना. अब unlabeled data means what है? देखा है कभी? लेबल डेटा क्या होता है? लेबल डेटा कैसा होता है देखा है? देखिए, let me tell you. आप जब वो डीप लर्निंग का एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो आपने वो एल्गोरिथम को ये नहीं बताया कि ये किस टाइप का ऐप है, या फिर अगर आप कैटेगरियल इनकोडिंग करते समय अगर उसे बता रहे हो कि दिस इज अ फ्रोजन व्हाट वी कॉल, हां राइट, ओके, तो फ्रेश है या रॉटन है अगर ये आप बोल रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज लेबल डेटा. बट मैंने उसे नहीं बताया, मैंने एक फोल्डर लिया उसमें सभी इमेजेस डाल दिए, वो एल्गोरिथम खुद होके क्लासिफाई करेगा बेस्ड ऑन सम सिमिलरिटी. लेट मी टेल यू वन थिंग. अब मैंने अगर बोला यहां पे सपोज आई टेकन वन बॉक्स, उसमें मैंने तीन कलर के बलून्स रखे और आप लोगों को बोला क्लासिफाइड. मैंने ये नहीं बोला आप लोगों को कि रेड वाले अलग करने हैं, ग्रीन वाले अलग करने हैं और येलो वाले अलग, ये मैंने नहीं बोला. मैंने क्या बोला? सिर्फ क्लासिफाइड. मैंने क्या बोला? सिर्फ. फॉर एग्जांपल छोटंसं किचन मधलं एक्झाम्पल सांगतो. आपली आई जुन्या काळात होतं, आमच्या घरी होतं, आय डोंट नो मेनी हॅपनिंग. आई जेव्हा गहू निवडते गव्हामध्ये खडे काढतं तेव्हा आईला सांगावं लागतं की हा खडा याला खडामध्ये तरी काढ. ऑटोमॅटिक क्लासिफिकेशन राईट. तिच्याकडे फक्त एवढा, तिचं इंटेलिजन्स एवढं माहिती आहे की ही जी वस्तू आहे ती कामाची नाही आहे या कंटेंटमध्ये, शी इज रुनिंग फ्रॉम दॅट राईट. So that is, but we are not telling कि this is the part you have to remove. It will automatically diagnose. पण कधीतरी तिला सांगितलं होतं कोणीतरी राईट की हे सेपरेट करायचं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अनलेबल्ड. असा डेटा ज्याला तुम्ही क्लासिफाय करताना त्या अल्गोरिदमला तुम्ही हे सांगणार नाही की कसा क्लासिफाय करायचा आहे, तो स्वतःहूनच त्याच्या सिमिलॅरिटीज वरती क्लासिफाय करतो. जसं माझ्या आईज काय म्हणतात, रेड बरोबर ना, एक काम रेड वाले इकडे कर, ग्रीन वाले इकडे कर आणि येलो वाले इकडे. हे मी माझं इंटेलिजन्स वापरलं, मला सांगितलं नाही कोणी. पण हे जर मला कोणीतरी डिफाइन केलं, दिस इज कॉल्ड एज रेड बलून, दिस इज कॉल्ड एज येलो बलून अँड दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन बलून, सेपरेट इट अकॉर्डिंग टू द कलर, कॉल्ड एज लेबल डेटा. When you are going for the weather forecasting application development in machine learning, you want to predict the future. बघा machine learning चे तीन आउटपुट्स असतात. पहिलं असतं प्रेडिक्शन, दुसरं असतं क्लासिफिकेशन आणि तिसरं असतं रिकमेंडेशन. मशीन लर्निंग मध्ये कुठलाही घ्या, यू कॅन टेक मराठी कंफर्टेबल ना? ओके चलो बोथ. मशीन लर्निंग अल्गोरिथम के तीन आउटपुट है. हाउ मेनी? तीन. पहला प्रेडिक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड रिकमेंडेशन. बराबर. आप लोगों ने कोई ज्योतिषी के पास आपका भविष्य देखा मतलब कुठेतरी काहीतरी ते वी टॉकिंग अबाउट जे असतं ना मेष रास वगैरे आपण एखाद्या दिवशी वाचतो आणि तसंच घडतं. हॅपन समटाइम्स ओनली फ्यू डेज, नाही ना असं प्रत्येक वेळेस नाही, कधीतरी. दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्शन. आप कल जाने वाले हो, कल 12 बजे when you will finish, that is called as prediction. असं होईलच का? I say that 100% tomorrow 12 p.m. till tomorrow 12 p.m. you have a time. It is called as prediction. Will it happen? No. 50-50% chance. Right ना? उसकी एक्यूरेसी 100% है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका एल्गोरिथम एक्यूरेसी आपको 100% दे रहा है. I see a lot of cases weather forecasting department
कल आप घर से बाहर मत निकलना, बहुत हेवी रेन होने वाली है। हम टोटली सुबह प्रिपेयर हो जाते हैं, कभी भी तो कॉलेज रेनकोट वो व्हाट वी कॉल अम्ब्रेला एंड ऑल एंड वी हैव टेकन विद बस पूरी प्रिपरेशन के साथ। मुंबई पुणे वाले तो पूरे प्रिपरेशन के साथ होते हैं हमेशा। ओके, शाम हो गई, सब कुछ लाके रखा, बारिश नहीं है। ओके, चाय बनाने का सामान भी साथ में लेके आए थे, अच्छी बारिश है तो चाय वगैरह पिएंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, बट बारिश नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट गिविंग अस द प्रेडिक्शन व्हिच विल दिस सेज नाइट। हां, सबसे सिंपल एग्जांपल, डेटॉल। व्हाट इज द एड 99.9% जर्म किल करता है ना। अरे डेटॉल के नीचे लिखा हुआ है 100% क्यों नहीं लिखा? व्हाई 99.9% लिखा? अगर किसी ने डेटॉल से हाथ धोए और फिर उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और अगर उसमें जर्म्स दिखे तो आप उस पे क्लेम कर सकते हो। कब? अगर उसने 100% लिखा था। अब वो क्या बोलेगा? अब मैंने थोड़ी बोला है 100% क्लियर करता है करके, मैंने तो बोला 99.9%, दैट इज माय एक्यूरेसी। Getting my point? So prediction not always be true. Maybe your machine learning algorithm give you the accuracy of 100%, but there will be the manual evaluation always. Particular patient का data अगर मैं filter out कर रहा हूँ through the machine learning algorithm, it is predicting this patient is suffered by particular disease. It is a diabetic patient. This is a 100% accuracy, but this is a machine prediction. It's not always true. Getting my point? अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो लैब्स के रिजल्ट भी अलग-अलग लैब के अलग-अलग मिलते हैं। दिस आल्सो हैपेंड समटाइम्स बिकॉज़ दैट इज अ मशीन डिफेक्ट। लैब वाले का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर मशीन का प्रेडिक्शन एल्गोरिथम्स और हर चीज अलग-अलग होती है, सो दैट द डॉक्टर विल रिकमेंड कि नहीं आप इसी के पास से टेस्ट करो। क्लियर? प्रेडिक्शन क्लियर। सेकंड, रिकमेंडेशन, क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लासिफिकेशन। थर्ड इज रिकमेंडेशन। व्हाट इज द रिकमेंडेशन? साडी विकत घेतली शॉपमधून, फ्रेंडला दाखवली, ड्रेस घेतला, फ्रेंडला दाखवला, तो काय म्हणतो, अरे थोडासा कलर जर असा असता ना छान दिसता, किंवा या शर्टवरती जर टाय वगैरे वेअर केली ना लुकिंग नाइस, किंवा शूज या कलरचे घेतलेत ना, इसका मदर प्रोडक्ट परचेसिंग समोसा कचौरी वो कभी उसमें रिकमेंड नहीं करता है। राइट ना, रिकमेंड करता है क्या? नहीं करता है। बट अगर आप ये कंटेंट लोगे, ये फूड लोगे तो इसके साथ ये आपको रिकमेंड करेगा। Right? That is called as what? Recommended. On each purchase किया, bread purchase किया, दूसरा आया milk bread, तीसरा आया milk bread, चौथा आया milk biscuit, पांचवा आया सिर्फ milk, छठवां आया milk biscuit, सातवां आया milk biscuit, आठवां आया milk bread। अब वो शॉपकीपर को एक चीज समझ में आया, whenever my customer is coming to me, he is purchasing milk plus bread और milk plus, मुझे एक इंटेलिजेंस मिलेगा कि मैं एक ऐसा कॉम्बो ऑफर बनाऊं कि अगर वो मिल्क के साथ ब्रेड परचेस करेगा आई विल गेट 10% ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट? वर्ल्ड एज व्हाट? रिकमेंड। या फिर कोई नया बंदा जब आता है और वो बोलता है कि मुझे मिल्क चाहिए, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा, सर कॉम्बो ऑफर चल रहा है, ब्रेड भी लेके जाइए। राइट? उसको तो पता है कि ये कस्टमर का पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड एज रिकमेंड। तो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस डेटा को एनालाइज करेगा, डेटा को एनालाइज करके उससे एक पैटर्न बनाएगा। अगर नया कोई पर्सन आता है तो उसे रिकमेंड करेगा व्हिच प्रोडक्ट दे हैव टू चूज बेस्ड ऑन व्हाट? नंबर्स ऑफ पैरामीटर, डेमोग्राफिक। अब ऐसा होता है कि नागपुर के लोग ज्यादा बैकअप चार्जेस परचेस करते हैं, क्यों? क्योंकि नागपुर में हो सकता है लोड शेडिंग का इशू, राइट? ओके, हो सकता है मे बी। विंटर में पता है कि जब डेमोग्राफिक कंडीशन और वेदर कंडीशन दोनों भी प्रोडक्ट का सेलिंग होता है हमारे यहाँ इन इंडिया मोस्टली। सो बेसिकली जब विंटर्स आर कमिंग ओवर देयर द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी चेंज, राइट? फेस्टिवल बेस्ड मोस्टली फोकसिंग ऑन द फेस्टिवल्स, फेस्टिवल में सेलिंग बहुत ज्यादा होता है। तो फेस्टिवल में क्या परचेज होता है, इसका एनालिसिस पैटर्न सब कुछ है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पास जो डिवाइस है ना एंड्रॉइड फोन, ये आपके सभी डेटा को गूगल को प्रोवाइड करता है। यू आर द इनडायरेक्ट कस्टमर ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर आप किसी का स्टेटस देख रहे हो, उसके हाथ में वॉच है और आपने वो जूम करके देखी, वॉच बहुत अच्छी लग रही है। दूसरे दिन आपके हर सोशल मीडिया अकाउंट पे सिर्फ वॉचेस की ऐड आएगी, होता ना? त्यांना कोणी सांगितलं की मी वॉचला झूम केलं पाहिलं म्हणून आणि इंटरेस्ट आहे म्हणून वॉचमध्ये इंटरेस्ट क्रिएट झाला ना, म्हणजे मोबाईल तुमचं लक्ष ठेवतो। ओके, यू डोंट नो व्हाट इज द इंटरनल मेकॅनिझम ऑफ द गूगल। तुम्ही कंटेंट पाहत असताना तुमचा कॅमेरा ऑन असतो
तो कॅमेरा तुमच्या आय मुवमेंटला आणि आयरीजला कॅप्चर करतो आणि तुम्ही कुठला पार्ट झुकून पाहताय, कुठल्या गोष्टी पाहताय, एव्हरीथिंग विल बी कॅच बाय द Google intelligence will developing the some some algorithm. It will filter out in that data. तुम्ही त्याला 10 पॅटर्न टाका की 8 पॅटर्न टाका, टोटल मोबाईल तुमचा इन्सिक्युअर that way. No data privacy. Even though India मध्ये no data privacy is there. Everything is public. Everything you not believe. तुमच्या गॅलरीज मधले फोटोज तुम्ही कुठल्या लोकेशनला आहेत ते सगळं पब्लिक आहे. आणि Google जर एका मिनिटात जर डोक्यात आणलं ना, I want to kill these all people who are using Android phone, तुमचा मोबाईल ब्लास्ट पण होऊ शकतो एवढे जागा Google. आणि जर ते बोलता गेले तर बोलता चालले जाते. ओके, बाकीचं बोलणं बघ दोन्ही का पार्टी मध्ये पार्टी टू आहे. ओके, सो दिस हॅपेंड, दिस मच ऑफ पॉवर Google have. Okay, they are storing the data, they are collecting the data, processing that and selling it to bank. Getting a point? Okay, every country have a different data policies. Okay, but they are also based on machine learning algorithm and deep learning algorithm. Clear? Recommendation is clear? Okay, first is machine learning के 3 output. पहला prediction, second, third, come again 3. First, then supervise and classification. First algorithm बुक्स मध्ये पाहायचं नाही. फर्स्ट इज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. Clear? Okay. Now coming to the unsupervised machine learning. A machine learning algorithm which will work on unlabeled data what is unsupervised machine learning. It have two types. First is association and second is clustering. K-means clustering algorithm. Have you heard? A priori algorithm. Have you heard? So these both algorithms will become. In association, we are going for the a priori algorithm. A tends to B, B tends to C. It means that A tends to C. Clear? Secondly, talking about what? Secondly, talking about the classification, clustering algorithm. K-means clustering, making the clusters of data, analyzing it, and then providing it to the machine learning algorithm. Called as K-means clustering. Clear? This point is clear? Yes or no? Anyone have a question? कोई क्वेश्चन है इसमें? Free to ask. If you have any question in your mind, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. Yes, anyone? First we talk about AI, ML, ठीक है? Supervised, unsupervised reinforcement. Now what is the reinforcement learning? क्या होता है? Reinforcement learning किसे कहते हैं? A child learning is called as reinforcement learning. For example, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो हम लोग उसे कैसे पढ़ाते हैं? तिकडे जायचं नाही, स्लॅब. परत सांगतो तिकडे जायचं नाही, स्लॅब. परत सांगतो तिकडे जायचं नाही, स्लॅब. चौथ्यांदा तो विचार करतो की तिकडे जायचं की नाही जायचं. हा, मग तू तुम्हाला एका ठिकाणी दिसतो देवाला उभा. गुड. परत गुड. परत गुड. काय समजलं त्याला? What to do and what to not. Clear? Called as reinforcement. Base one, penalty and reward. इकडे गेला तर penalty. इकडे आला तर reward. हाँ, बेटा चॉकलेट. Good. You are doing good. होमवर्क केलाय का? नाही केला. सकाळी सांगितलं होतं जाताना होमवर्क करायचा. का नाही केलं? penalty. दुसऱ्या दिवशी तो reward. So that is what it means. What? If you are giving the training to any machine, your machine will giving the right answer to you. Will give the reward. It will keep in their memory. यार ये ऐसा आंसर दिया, ये क्वेश्चन था, ये आंसर है, तो रिवॉर्ड मिला. दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग आंसर था, नो दिस इज रॉन्ग, रिवॉर्ड मिला. तो ऐसा आंसर वापस से नहीं देना. तो कौन सा देना? ये देना. दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन के मैंने दो आंसर दिए. एक पे मैंने पेनल्टी दी, एक पे मैंने रिवॉर्ड दिया. तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कंटीन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस में रहेगा कि कब कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, बेस्ड ऑन व्हाट यू आर पेनल्टी एंड दैट इज कॉल्ड फीडबैक बेस्ड इवैल्यूएशन. वी कॉल इट एज क्लियर. और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है हर एल्गोरिथम का. वी कॉल इट एज एफ मेजर प्रिसीजन रिकॉल. सुना है? स्टैंडर्ड डेविएशन, आर स्क्वायर, एमएसई. इवैल्यूएशन, इफ यू आर डूइंग द रिसर्च और इन फ्यूचर इफ यू मे गो फॉर द रिसर्च,
you have to just plot your result analysis based if your project is on machine learning, then you have definitely go for this kind of parameters. Am I clear? Okay, machine learning clear? ठीक है? How the machine learning, चलो अब थोड़ा सा डीप लर्निंग के बारे में बताता हूँ, फिर मैं स्टेप्स बताऊंगा कि कोड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर आप लोगों के पास मैंने वो कोड शेयर किया है, उसे आप ओपन करके देख सकेंगे, उसमें सब कुछ लिखा होगा, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. सो सी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोसीड, हाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. सी व्हाट टू डू, लिसन एवरीवन प्लीज. सबसे पहली चीज देखिए, मशीन लर्निंग कब यूज करना है और डीप लर्निंग कब यूज करना है. अगर आप लोग यू वांट टू गो फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑन इमेज प्रोसेसिंग और यू हैव एन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ा डेटा सेट है और आपका डेटा सेट बहुत कॉम्प्लेक्स है. बहुत कॉम्प्लेक्स है यानी इन द सेंस व्हाट इट कंटेन्स द नियर अबाउट 30-40 कॉलम्स एंड वन प्रेडिक्शन. तो इस केस में आपको डीप लर्निंग के लिए जाना है. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग? व्हाट इज द इनपुट ऑफ मशीन लर्निंग? क्या इनपुट है मशीन लर्निंग का? क्या इनपुट होता है? डेटा, राइट ना? डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और इन सबका इनपुट क्या है? हिस्टोरिकल डेटा, जिसमें करोड़्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे. दीस आर द इनपुट्स. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का एक प्रॉब्लम है, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर डेटा चला जाता है, रिकॉर्ड चला जाता है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विल ड्रॉप द एक्यूरेसी लेवल. ओके, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही डेटा प्रोसेस कर सकता है मशीन लर्निंग. दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग. जब मेरे रिकॉर्ड कुछ लिमिट के ऊपर चले जाते हैं तो मशीन लर्निंग आपकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देगा. हाँ, कभी-कभी 2 लाख रिकॉर्ड, 5 लाख रिकॉर्ड को प्रोसेस कर लेगा, कोई इशू नहीं है. जब मैं बोलूंगा कि अब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है, तो मशीन लर्निंग इज नॉट कैपेबल टू डू दैट ऑपरेशन. पहला. दूसरा फेज